Hello everyone, this is Jankit Bhatt here recording this lecture for of Animate CC for Zica Malad and Zica Borivali. In the Animate CC today we will be looking for the auto animation option. Auto animation option will goes on its name only. I'm sorry, goes in its name only. It will create the animation automatically. How? We will see that. This animation will be used when you want to show car is moving, when you want to show. Just a minute, I'll create an object and then show it to you. First, let me create a dimension. 550 by 400 will be the okay basic one, the standard dimension. If your car is moving from here to here and you want to show the wheels is also moving along with that one, then you can show that using the automation. Automation will not ask you the distance, it will not ask you the dimension. वो कुछ पूछेगा नहीं, आपके टाइमलाइन के हिसाब से जितना भी मूवमेंट होगा उतने रोटेशंस क्रिएट कर देगा. राइट, लेट्स सी हाउ. एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं सिंपल सा. देखिए ये कोई कार बना नहीं रहा हूँ मैं खाली सिंपल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसको हम डिपिक्ट करते हैं लाइक अ कार या समथिंग है और कुछ नहीं. ओके, मेन कॉन्सेप्ट समझना है हमारा अभी. सो आई विल अंडरस्टैंड दिस एज एन ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है. इन ऑर्डर टू मूव दिस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लेट मी जूम इन. आई विल कीप इट हियर. Okay. After that एक कनेक्शन बता देंगे यहाँ पे. सो दैट विल बी कनेक्टेड टू बोथ. ओके, सिंपल ऐसा टॉय जैसा कुछ बना दिया हमने यहाँ पे. एंड विल टेक अ न्यू लेयर. आफ्टर टेकिंग द न्यू लेयर यहाँ पर एक व्हील जैसा कुछ बना दीजिए. ओके, इन दिस व्हील we will take one dividing line. Okay, after that double click and first of all change the colors and alternative gaps over there. Just keep it this one. I'll put a little bit off white which will look good as far as animation is concerned. Right, then double click, double click, double click, alt and drag here, and then alt and drag here. Press Q, reduce the animation. No, we'll keep it this much only. Or else we will do one thing, we'll keep this one and we'll delete this. Now see, ये select हो गया तो मुझे वो बीच में select नहीं चाहिए. So मैं lock कर देता हूँ layer को. वो layer locked हो गया, so I cannot mess with the object of that particular layer. Okay, अगर आपको hide करके देखना है कौन सा layer है वो, see, this is that background layer. अब गलती से भी वो लेयर मूव नहीं होगा या उसका ऑब्जेक्ट आपसे मूव नहीं होगा. ये लेयर नहीं होना चाहिए. ये भी डिलीट नहीं हो रहा बिकॉज मैंने सारे लेयर्स को लॉक कर दिया. इसको अनलॉक कर दो, डिलीट करो, सेलेक्ट करो और इसको आप यहाँ पे ले लो. ओके फाइन. अब दोनों व्हील्स भी डिफरेंट लेयर पे होने चाहिए. सो ये व्हील को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे. विंडो सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाइए और कट कर दीजिए और इसको नाम दे दीजिए W1 मतलब व्हील 1. देन यू क्रिएट द न्यू लेयर एंड उसको नाम दे दीजिए W2 मतलब व्हील 2. और मुझे वही जगह पे पेस्ट करना है जहाँ से उसको मैंने कट किया था. सो आई गो टू एडिट एंड आई से पेस्ट इन प्लेस. देयर आफ्टर मैं ये लेयर पे पहले इट विल बी द एनिमेशन फॉर 2 सेकेंड्स. 2 सेकेंड्स के सारे फ्रेम पर की फ्रेम दे दीजिए F6. राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्विन, ओके कीजिए. अगर ओके नहीं पूछता है देन डोंट वरी, यू आर यूजिंग लिटिल ओल्डर वर्जन 17 और 18. दिस इज 19 इसलिए पूछ रहा है. यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्रिएट क्लासिक ट्विन, ओके. आफ्टर दैट आई वांट, अच्छा इसको अनलॉक कर देते एंड एट द एंड ऑफ द फ्रेम एनिमेशन आई वांट दिस ऑल ऑब्जेक्ट टू कम हियर. इट इज कमिंग, यस. कंट्रोल 2 जूम इन. मूव हो रहा है मूव, बट ये व्हील्स मूव नहीं हो रहे. व्हील्स आर जस्ट स्टेबल विच लुक्स वेरी फेक. व्हील्स मूव नहीं हो रहे. व्हील्स भी मूव करने के लिए यू क्लिक इन बिटवीन द 2 frames
You click in between the two frames, come to rotation, auto, okay, and then you go for clockwise. Clockwise मतलब just like a clock. And एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ऑपोजिट टू क्लॉक जाता है, ओके, काउंटर क्लॉकवाइज जैसे कहते हैं, तो क्लॉक के ऑपोजिट जाता है, बट हमें क्लॉकवाइज जाना है बिकॉज अपना जो ऑब्जेक्ट है वो फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड नहीं आ रहा। अब देखिए व्हील्स भी मूव हो रहा है साथ में। अब सेकंड पे अगर आपको व्हील्स मूव करना है देन अगेन विल डू क्लॉकवाइज। ओह, गलती से क्या हो गया, इट इज व्हेन दिस ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज हो गया। ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ये वाला व्हील्स वाला लेयर्स होना चाहिए, इसलिए लेयर्स को ऑलवेज नाम दीजिए। विल गो फॉर क्लॉकवाइज। नाउ सी, विल प्रेस इट, एंटर। Okay, I want the truck to stay there for some time, almost a seconds. Okay, बाद में ट्रक वापस भी तो आएगा पीछे, ऐसे बताते हैं हम। It'll take 1 second। वापस यहाँ पर F6 कीजिए, सारे ऑब्जेक्ट को पीछे लेके आइए। नाउ यहाँ पर वापस क्रिएट क्लासिक ट्विन, क्रिएट क्लासिक ट्विन, क्रिएट क्लासिक ट्विन, वापस आ रहा है। अब मुझे बताना है कि व्हील्स रिवर्स मूवमेंट पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए फर्स्ट आप, एंड देन ऑटो पे जाके एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। ओल्डर वर्जन में है एंटी क्लॉकवाइज, 19 में है क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज, सो इट डजेंट मैटर, काम तो वही करेगा। इट विल डू द सेम जॉब कंप्लीटली। सी, विल मूव द ऑब्जेक्ट, इट विल बी स्टेबल and it will go behind. Let's press enter, test the movie and see. It goes ahead, it stay backs and it comes back. Control enter. See, my main agenda was not to create a truck or car. मेरा main agenda था to explain you how the auto animation works. जैसे आपका टाइम बच जाता है। थोड़ा सा देखिए मूवमेंट फ्लिकर हो रहा है, नीचे था ऊपर जा रहा है, राइट, विच इज़ नॉट गुड, ये नहीं होना चाहिए। ग्राफिक के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो अचीव होने ही चाहिए। ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट आर, रूलर लीजिए एंड चेक द ट्रक मूवमेंट कहाँ पर है, जूम कीजिए, इज इट प्रॉपर विच वी कैप्टेड, फाइन, रूलर वहीं पे रहेगा। अब देखिए ट्रक थोड़ा नीचे आ रहा है, विच इज़ नॉट गुड, ओके, भले यहाँ का गैप कितना भी हो चलेगा बट लेवल तो सेम ही होता है ना अर्थ का। सो यू नीड टू सिंपली select and hold down to shift and move it up. Okay, now let us see, जर्क हो रहा है क्या जब ट्रक वापस आएगा तब? नो, कंट्रोल 2 करके देखते हैं जर्क हो रहा है। ट्रक या ऑब्जेक्ट, आई एम सॉरी यू कांट से एज अ ट्रक। ओके, सो ऐसे स्मूथ एनिमेशन होना चाहिए। लेट्स सी बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंटर। नहीं हो सी, अब एनिमेशन ट्रक पीछे जाके तुरंत वापस चालू हो रहा है, वैसे मुझे नहीं चाहिए, वहां पर भी थोड़ा स्टॉप होना चाहिए। ओके, पॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनिमेशन, सो 1 सेकेंड्स के लिए यहाँ पे पॉज होगा, तो यहाँ पे क्लिक करके F5 दे दीजिए, विच इज़ अ फ्रेम, देन यू हिट कंट्रोल एंटर। See, it will stop over there for a while and then it will begin. Okay, so this was my tries to teach you about the auto animation, which can be mostly used during this wheels and part, right? So next time I'll be creating the web advertisements for you people. I hope you people understand the concept, and if you have any kind of doubt, please feel free to contact me, right? Till then, create something new, create something crazy and creative. Happy learning.